A very warm good afternoon, one and all present over here. Rotarian Rotractor Anmol Chawla, Vice President, SERIC MDIO Session 2020-21. He was the DRR in the year 2017-18, Chartered President, Rotary Club of Delhi Elite, co-founder and co-founder and director, Virach Group of Companies, proud co-founder and trustee, Tobacco Go Acquit Tobacco Movement. He loves traveling, sports, and music. Guys, please welcome PDRR Dr. Anmol Chawla from RID 3011. Hi guys, sound check, am I audible? Yeah, Anmol. Perfect. So, can I have the presentation which I just sent to Tasneem? Yes, Anmol, just wait for 1 or 2 minutes No if you problem. No don't mind. problem. No problem. So, in the meantime, who all do we have on the call? We have 48 members. So, we have district council or president elects as well. Shivam, sorry, Anmol, we are having the board of directors. All As well, we are having the zonal representatives and zonal leaders from the district. All right. So, you are council only, right? Yes. Basically, the main officer council. Done. Okay. So if you can give me the access, I can present, I suppose, from my laptop. Okay, that's fine, Anmol. Actually, he is doing it. So Okay, you no can problem. wait No for problem. another one. Yeah. Okay, Yeah. fine. So in the meantime, yes, everybody is here. I would request Tasneem, everyone to be on their toes for this because it is going to be an interactive session. Uh, so we would be doing, since it is all about public image and public image. is PPT visible to you, Tasneem? 1 second, Shivam. No, not yet. No, it's visible. Wait, wait. Okay. PPT is visible. Okay. PPT is visible. You can just do it in the presentable Tasneem, we can format. start now. Yes, Rahul, dear, we can start. Perfect. Shall I go ahead, Rahul? Yeah. Great. So, guys, this topic is certainly something which is very important to Rotary International's heart. Everybody and every Rotarian, or rather every Rotaractor and Interactor, requires this to be adhered to. Firstly, just one thing, Tasneem, shall I keep it in the both flow Hindi and English, or English? What do you prefer? You can go with bilingual, Anmol. No issue. All right, great. So, enhancing public image and awareness. So, as thank you for the introduction, Rahul, and past year and Mol Chawla. Next slide, please. So, I would need one. No. I would need one volunteer who is going to be this character. So, Rahul, I need one name from you so that I can be interactive. Who is this person thinking? Shivam. Shivam. Okay. So, Shivam, glad you could make it. So, Shivam is thinking. Next, please. Next slide. So Shivam is actually wondering. So Rotary International is such a reputed global organization. Does it still require enhancement in the public image? Next. So I'll begin with Rotary public image initiatives, जो already market में चल रहे हैं, which you might have come across every now and then. Next slide, please. So this is evolution of our Rotary logo. So if you can see, Rotary logo का evolution starting from a normal cycle wheel to Sir, please once more Technical unmute team, yourself. please unmute Anmol.
Anmol sir, please unmute Yeah, yourself. yeah. So Okay, okay. fine. Sorry for the technical happening, Anmol. No problem, no problem. So evolution of our rotary logo. So if you can see, it started from a cycle normal wheel to a rotary wheel that we follow these days. So why this evolution is happening, that is the main concern. It is happening because of the acceptance. We are youth right now, majority is youth in the world. So we want something to be, attractive. Now, if you can see the first leftmost picture to the right bottommost picture, there's a huge difference between that image and this image. So we have evolved all throughout in the last 115 years. So that's how we are improvising our public image through our Rotary logo. That is our basic. Next slide. The Rotary Public School. So this is one of the, I would say it is one of the only schools that Rotary has under its run. Why this is being held? Because we want to showcase the Rotary word that yes, we are strong in providing education to the school students as well. So that's one good part that we are playing as far as Rotary Public Image is concerned. Next slide. Rotary Cancer Hospital. So this is AIMS. So AIMS ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज आप सबने सुना होगा. तो वहाँ पे भी हमारा रोटरी का एक कैंसर हॉस्पिटल है काफी बड़ा. Now it could have been just कि हम पैसे तो Rotary invest a lot of money, so we are major donors. Everybody invests a lot the Rotary Foundation में. But why is the Rotary word coming there? It could be just कि हमने पैसे invest करे, पैसे donate करे हैं organization काफी अलग organizations को, and then we can just run the hospital. But no, so Rotary word coming there at such a prestigious hospital is another part of public initiative, public image drive, which because एम्स में लोग लाखों पेशेंट्स रोज लाखों पेशेंट्स हैं, लाखों पेशेंट्स का रिकॉल वैल्यू आता है क्योंकि रोटरी इज डूइंग सच ग्रेट वर्क. नेक्स्ट, रोटरी विद इंडियन रेलवे. सो दिस इज वन ऑफ द आई गेस रिकॉर्ड होल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद इंडियन रेलवेज, जिसमें कुछ लाखों ऐसे कप्स डोनेट किए गए थे विच वाज बीइंग सर्व नॉर्मली, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं. This is again one of the humongous initiatives to promote Rotary as an organization, that what good they are doing. So you can see Rotary Blood Bank on that branded cup. So we are promoting Rotary blood initiatives because we are super strong in polio, blood donations, etc. That's one way of promoting its public image. Next. So these were the costly ways of enhancing the public image of Rotary. We all are Rotractors here. Now how can we Rotractors help in a more efficient and effective way? Because हमारे को पैसे कम लगाने हैं and ज़्यादा चीज़ लगानी है, ज़्यादा branding करनी है. Next slide. So Shivam comes again and he asks, next, still wondering, why do we really need to enhance the public image? अभी भी हमें पता तो चल गया कि हमें कैसे कैसे हम इवॉल्व करें हैं as far as public image is concerned, but हमें एक्चुअली में क्यों करनी है चीज़. नेक्स्ट. So acceptance of our work as Rotractors in the society is the key. Now acceptance, as I mentioned earlier, if we keep on doing community service, we keep on hitting villages, we keep on hitting slums, we keep on doing big projects, अगर हमें कोई जानेगा ही नहीं, so हम अपना कैसे उन्हें credibility prove कर सकते हैं. So these days you can just see social media is booming. We can take the help of social media in expanding our scope of work and promotion, so that we are being accepted in the market. हमारे काम को देखा जाए, सराहा जाए, तभी हम इस चीज को, इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. रोटरैक्ट इज इन 53rd ईयर, दिस 50 सो दिस इज 52nd ईयर. तो 52 साल की लेगेसी को प्रूव करना रिक्वायर्स सम हार्ड वर्क on the ground and off the ground. So off the ground में we need to increase the public image through social media, etc., which is our prime focus. So that is why Rotary has evolved in the last 115 years of its existence, and it will keep on evolving by increasing the public image. Next. So we work so hard to serve the society by ourselves. We need to showcase that to the world to inspire them. So the red line, if you see, so you can physically serve a few communities. I'm getting a disturbance. Can you please mute yourself, because I guess you're just, yeah, thank you. So if you see the red line, you can physically serve, क्योंकि हम अगर देखा जाए, हम एक विलेज में काम करते हैं या किसी एक विलेज से कम्युनिटी सर्विस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो हम अपने आसपास में ही वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट बाहर नहीं जा रहा है.
we are serving either 10 people or 100 people, not more than that. But if you can physically serve a few communities in your region, अगर आप social media की help लोगे वो चीज़, if you promote it in the next level, so you can inspire a lot of road in the outside world, so that वो आपके project से inspire होके हो सकता है वहाँ पे अपने आपके project को take up करके, you know, they keep on the project in their community itself. तो जहाँ पे आप 100 लोगों को treat कर रहे थे वहाँ पे हो सकता है आप 1 लाख लोगों को treat कर रहे हो. So that is the power of increasing the social media public image of your club, your road tractors at an individual level. Next. So we are hyperactive on social media these days, and thus it creates an everlasting recall in the mind of others. So what Rotary does? So हम जो actually कर रहे हैं वो social media के through we can promote in the best way. Next. Again Shivam comes and he asks, how can we do that? Next. So this is actually, I would say this is Rahul. So Rahul then comes up and says, so there are 4 things that are very important to be taken care. So first is Rotary Brand Center. So if you're not aware of Rotary Brand Center, it's rightly there on My Rotary. You can just go there. There are brand guidelines, how you can promote the logos in the best possible way, how you can make your own logos, how you can make your designs to be promoted on. Next. How you can professionally design your posters. बहुत सारे फीचर्स आजकल अवेलेबल है, कैनवा है, ये है वो है, हर एक की आप हेल्प लो. मेक अट्रैक्टिव पोस्टर्स, मेक श्योर कि वो पोस्टर्स में आप जो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं दैट कम्स इन द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे. नेक्स्ट. And then you post them on social media handles. Now it is not just about Instagram or Facebook. There are YouTube, LinkedIn. Try करो जितने मैक्सिमम हथियार अपना सकते हो अपनाओ, because ultimately at the end of the day if you have reach to every other handle, because हर handle की audience different है. So for LinkedIn you have an audience of corporate, for Facebook you have an audience of, let's say, normal socializing people. So how LinkedIn can help you in this way? LinkedIn पे सारे अगर corporate houses हैं, CSR word आपने सुना है, everybody is on there with their social funding. तो मे भी किसी को आपको प्रोजेक्ट किसी दिन पसंद आ जाए, एंड यस इफ यू अप्रोच समवन तो हो सकता है आपको फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएं. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू बी टेकन केयर. तो हर एक पे अगर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट. प्लस हाउ यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर पब्लिक इमेजेस इन्वॉल्व पब्लिक फिगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. तो अगर आपका इंडोर्समेंट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड पब्लिक फिगर्स, तो आपको पता ही होगा कि आपके कितने फॉलोअर्स एंड रीच आपका बढ़ जाएगा. एंड इफ दे आर एंडोर्सिंग, देयर फॉलोअर्स विल बी नोइंग अबाउट यू. तो ट्राई करो धीमे धीमे, यू जस्ट कीप ऑन अट्रैक्टिंग योर कॉन्टैक्ट्स, जिसमें इफ यू सी कि हाँ कोई टिकटॉक स्टार बन गया है, कोई इंस्टाग्राम पे दे हैव 1 million फॉलोअर्स और लाख फॉलोअर्स, ट्राई टू उनको कन्विंस करो सो दैट दे एंडोर्स योर प्रोजेक्ट और क्लब प्रोजेक्ट. सो नेक्स्ट. So if you'll see, these all are correlated. So yeah, next. So these all are correlated. If you do, so Rotary Brand Center is, I would say, the resource that you have. So Rahul has correctly mentioned all 4 points here. If you see, so since he's your current DRR, he has all the responsibility on his shoulders till 30th June to make sure that he clearly signifies the correct approach towards increasing the public image. Next. So major impact. हर चीज ठीक है, वी आर एनहांसिंग पब्लिक इमेज, हम सब चीज करने का ट्राई कर रहे हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है उस चीज से? So we are stuck at a number of 1.5 million members. So 1.2 million are Rotarians and the other 0.3 million are Rotractors and Tractors, everyone. हम पिछले 100 साल में एक बहुत अगर निजी चीज है रोटरी की, so when we, I guess 50 साल पहले, we were still 1.2 million members as Rotarians, if I say. On the current date, we are still 1.2 million. And it is said that जो 50 साल पहले 12 लाख लोग थे वो सारे जा चुके हैं एंड अगले 12 लाख लोग आ चुके हैं. तो एवरेज स्टिल मेंटेन्ड है, बट वो 12 लाख लोग क्यों गए? बिकॉज दे कुड नॉट रिटेन एज अ मेंबर, दे हैड अदर प्रायोरिटीज, और अदर उसमें से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको रोटरी समझ नहीं आई. तो हमें उनको टैप करना जिनको रोटरी समझ नहीं आई. वी नीड टू शोकेस देम द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ दैट वी हैव. वी नीड टू शोकेस दैट द एग्जैक्ट वर्ड, the word of projects that we are doing. So that's how the public image plays a big role so that we can retain our members in the longer run.
So we'll be able to retain the membership if we can portray the exact public image of our fraternity, which is of prime importance. So that's how the public image plays the vital role uh, in the growth of our organization. Next. Yes, so this was just a 5-10 minute feeder. So any questions, I'm ready to take up. Jasneem, do we have any questions? Rahul? Anybody want to ask any question? Retractors will be waiting for another 2 minutes. If you have any question, post that in the chat box and it will be answered by today's guest speaker, Anmol Chawla. Thank you. So Rahul, if you feel that you have a question on behalf of your retractors that you feel कि कभी ना कभी ये उड़ जाता है, random question regarding public image that I am wait for another couple of minutes. I'm sure they will come with their doubts. Sure. So one question is there, sir, how I know the need of public. Okay. How I know the need of public. So the thing is, we have different cultures in our societies. There are cultures, let's say कि there's a village culture. So एक अगर मैं बिहार और मैं दिल्ली की डिफरेंस लूँ तो बिहार में रिक्वायरमेंट करंट रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, एक विलेज में दिल्ली में कुछ और अलग होगी. अब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं. कभी भी आप देखोगे तो मेजर प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज प्लान्ड as per the need of the society, not as per the need of the organization. So that's one way to know the need of the public that you're willing to serve. Then promote and enhance the जैसे कहते हैं कि let's say कि उन्हें भाषा different आती है. So there are different ways to promote their project. First could be language. So promote that in the regional language or rather their community language so that they are able to connect to the project that you are delivering. Next could be focus on the highlights which that village gives you. वहाँ पे कुछ attraction जैसी हैं जिनका उनके साथ emotional connect है. So if you're having that, if you can see that emotional connect, which can help you engage them in your activity, nothing like it. So that's how you need to know. You need to get their requirement and then deliver the project, and hence promote it accordingly. Thank you for this question. सिल्क सिटी क्लब भागलपुर से हूँ, काफी काम है यहाँ पे अभी बट और भी जरूरत है, राइट? That your DRR will take care. Any so, question? Any other question? We are on for another couple of minutes. Yeah. And guys, no suggestion in the chat box. Only if you have a question, ask the question. If you are approaching for marketing to any of the known person, how can we convince them? So I guess you're talking about the public figures and influencers that I just talked about. Okay, yes, right. So there are two ways. So first is आपको अपनी लिस्ट को खंगालना है. पहले तो उसमें देखना है कि कौन जो लोग हैं वो थोड़े से इम्प्रोवाइज कर गए हैं इन देयर ऑन देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स. पहले उनसे आपको यू कैन नॉट जस्ट अप्रोच देम राइट अवे एंड आस्क कि भाई तू मेरा दोस्त था या फिर तू मेरा फैमिली कनेक्ट है, प्लीज हमारे लिए एंडोर्स कर दो. Nobody will do that. You need to first have a good presentation in hand about the project so that you can make them understand about what exactly you want to have from them. जब उनको क्लिक कर चुका है वो चीज, एंड मेक श्योर एंड रेस्ट बी एश्योर्ड कि 100% कन्वर्जन नहीं होगा. तो अगर आप 100 लोगों को अपने खुद के दोस्तों के पास जा रहे हो जो लेट्स से टिकटॉक स्टार्स बन चुके हैं या फिर कहीं और के स्टार्स बन चुके हैं, 100 के 100 कन्वर्ट नहीं होंगे.
100 में से 10 भी हो रहे हैं चलेगा। तो 90 पे फोकस नहीं करना है, 10 पे फोकस करना है। प्रोजेक्ट के बारे में कन्विंस करो, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिनको परवाह नहीं है कम्युनिटी में क्या हो रहा है, बट स्टिल आपको कन्विंस करना जरूरी है कि बॉस आपके इस चीज से, आपके जस्ट एक वीडियो मैसेज से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में। सो आपको सिर्फ वो इमोशनल क्वेश्चन पे हिट करना है उस पर्सन के, एंड आई एम श्योर वो पर्सन आपके साथ होंगे, एंड यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ योर लीडर्स, दे आर अस, they can surely help you get. So we want to create road track image in near villages. Which kind of activities should we should do as we are from institution based level? All right. So in the near village activities. So again, जैसे मैं starting में बोला, so first thing is you need to understand the need of the community. वहाँ का अगर आपको नीड पता चल चुका है, उसी हिसाब से बेसिक तरीके हैं अगर करना है, अच्छे खासे बैनर फ्लेक्सेस फ्रेम करवा के अबाउट द प्रोजेक्ट, दैट enhances द पब्लिक इमेज अ लॉट। क्योंकि जब भी वहाँ कोई लोग आ रहे हैं तो दे विल बी सीइंग रोटरैक्ट एंड दैट पर्टिकुलर रोटरैक्ट क्लब का नाम, so they would be 100% recalling your name as when that project comes into their mind कि यार उस बंदे को पकड़ लेते हैं, उस क्लब के वो हैं। अगर हम एक विलेज के बंदे को दिमाग में बिठा सकते हैं क्लब का नाम, सो बड़े तो समझ लेते हैं, बट उसमें से काफी लोग ज्यादा लिटरेट नहीं होंगे, तो उनके दिमाग में भी बैठाना इज अ बिग डील। सो आपको वहीं पे दो तीन तरीके ही हैं, अच्छे से फ्लेक्स बैनर्स लगा के ब्रांडिंग करनी है, स्टैंडीज लगा सकते हैं, सब चीज लगा सकते हैं, बट स्टैंडीज वैसे नहीं रोल अप स्टैंडी आप लगा के जा रहे हैं, नहीं, फ्रेम करा सकते हैं आप स्टैंडीज, सो दैट वो परमानेंटली फिक्स्ड रहे ऑन द वॉल्स एटसेट्रा। सो वैसे करके प्लस यू कैन डू वॉल पेंटिंग एक्टिविटीज इन द स्लम, सोशल मैसेजेस, बहुत सारे तरीके हैं। आई नो थोड़ा सा कॉस्ट इनकर होगा इसमें, बट यू कैन आई मीन डेफिनेटली टेक सपोर्ट फ्रॉम योर रोटरी क्लब्स एटसेट्रा। Okay, Anmol. I request Rotator Subham Tanmay for the vote of thanks. I think the question session is over now. Sorry to interrupt Okay. you, Rahul Bhaiya, but I guess we still have few minutes left, and we are done with the questions. So before of your departure and more, I request if you can share the objective and impact of your anti-tobacco project with the Rotractors. If you can wind it up like within a few minutes or something. Yes. So that's rightly pointed. So I guess this might boost a lot of Rotractors. So this was a Rotract project, I'll tell you. It was started when I was the president 2016-17. So being a Rotract project, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि हर साल प्रेसिडेंट, हर साल लीडर चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दे वर जस्ट वन थॉट, यार ये अगले साल शायद कंटिन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा ठीक है, इससे लेट्स टेक इट अप ऑफिशियली। देन आई कन्वर्टेड इट इनटू एन एनजीओ ऑफ माय ओन, इन विच वी आर मेकिंग श्योर कि हम उस पर्टिकुलर बीइंग अ रोड, अगर वो रोट्रैक प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें ऑब्वियसली क्योंकि सारे रोट्रैक्टर्स मिले रहते हैं, रेगुलर प्रोजेक्ट चलता है। बट सिंस जब से वो एनजीओ कन्वर्ट हुआ है, वी हैव स्टार्टेड डीलिंग विथ पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट विद दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का बार रेज हो गया। That's how I increase the public image of that project by involving the government with us. Because ultimately, if I'm serving the slums, villages में काफी लोग, हम actually इसमें काफी लोगों को treatment देते हैं free of cost, जो बहुत ज़्यादा addicted हैं, and just for tobacco, not for drugs and alcohol. But yes, we do give counseling for drugs and alcohol as well. Just for the main, एक ही reason होता है। I'm sure इस ग्रुप में भी काफी होंगे जो सुट्टा मारते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हैं, but our one and the only concern है जिनको एक्चुअली छोड़ना है, we just support them. तो हमारा ये one and the only agenda है, we just support them who want to quit. अगर किसी को आज नहीं छोड़ना है, वो 10 साल बाद जरूर आएगा, तो we are there again. So we do not force that person. So that's the core agenda of our organization, and we are working quite at a good level. So that's nice. So we have one more question. So how can we raise funds for these things? So 2-3 things these days are very trendy. First is CSR funds. So CSR funds are actually very tricky and not easy to get. So you can एक अगर easy method बताऊं, तो you have your Rotary clubs with you. Rotary clubs से हमेशा उतने पैसे मांगने की सोचो कि वो मना ना करें. Do not ask them 50,000, 1 lakh. Always try to ask them 2,000, 5,000 at the most, and not just from one club,
इफ यू हैव रैपो विद 2-3 क्लब्स, 2,500 करके मांगो, इजीली बंदा पर्सनल पॉकेट से भी देता है. दिस इज द कल्चर दैट आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. एंड हर कोई ये सोचता है कि रोटरी क्लब पैसे नहीं देते हैं. दे हैव टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, खुद दिखाना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये इजी वे होता है अगर आप अपने 2-4 रोटेरियन से अच्छी खासी बना के रखो. एंड नॉट पहले मुंह पे जाते ही सीधा आपको पैसे नहीं मांगने, तो जस्ट आपको प्रोजेक्ट पे एक्चुअली कन्विंस करना है. So they need to be convinced, they need to see the strength and sustainability of the project, and there's बहुत easy होता है. 2000 का तो नोट भी इसीलिए बनाया शायद कि इजीली रोटेरियन जेब से निकाल सके, वरना 500 के 4 निकालने is a bit challenging. So that's how you can raise some funds. Thank you so much, Anmol. Over to you, Shubham Bhaiya. Okay. Am I audible? Yes, Yeah. you are. सबसे पहले अनमोल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आए यहाँ पे और जुड़े, और साथ ही उन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्ट्स हैं और भी जो मेंबर्स हैं, उन्होंने उनका जो प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू उन्होंने अपने व्यूज़ रखे. और उन सभी रोटरेक्टर्स का भी शुक्रिया कि जिन्होंने अपने सवाल अनमोल भाई के सामने रखे. तो आप लोगों का एक बार और शुक्रिया. Thank you so much for having here. It was very nice interacting with you. 4-5 questions and it was very apt as per the situation. I hope my presentation could deliver something. And एक चीज बताता हूँ, so I just prepared this presentation 20 मिनट पहले. I tried to deliver something through a presentation because खाली बोलने समझ नहीं आता. So I tried to deliver something through images. So thank you. Thank you, Rishikesh. I see you are here. All the best to your session. Thank you so much, Anmol, for being Most here welcome. with us.